Okay, so we have already done the basic concepts, which are the domestic income, the national income, the domestic territory. We are moving forward now. So we'll be understanding the gross concepts. There is something called as gross concept. There is something called as net concept. Now, what do you mean by this gross concept, and what do you mean by this net concept? The gross concept सबसे पहले. So gross means overall or total. So what does this gross means? This means overall. So if I say gross income means, or it includes, so क्या क्या include और क्या क्या बताती है gross income? It includes depreciation or consumption of fixed capital. So gross concept क्या होता है? Consumption of fixed capital, यानी कि depreciation. Simple stated, it is gross concept, right? Next, net. Net का मतलब क्या है? Net income of nation means, or subtracts the depreciation from the ग्रॉस इनकम. सो ये जो हमने ऊपर ग्रॉस इनकम डिस्कस की है, ये इसमें से डेप्रिसिएशन को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट बिकम्स ग्रॉस इनकम. इसको हम ग्रॉस इनकम बोलते हैं, राइट? सो इसको हम नेट इनकम बोलते हैं, सॉरी. इफ वी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द ग्रॉस इनकम, व्हाट डू वी गेट? वी गेट द नेट इनकम. सो वी कैन ऑल्सो से net income does not include the depreciation. So net income जो है वो कभी भी depreciation को include नहीं करती. How will I denote it? I'll denote this GDP minus depreciation is equal to NDP, net domestic product, और gross national income minus depreciation is equal to net domestic income. ठीक है? Next, there is another concept which is market price and factor cost. So we start with the market price first. Market price. I can say saleable price. Saleable price of all the goods or services produced. So जो भी हम goods या services produce कर रहे हैं किसी भी country में, उसकी जो saleable price है उसको हम market price बोलते हैं. So can I also say it as sales price? We all understand what is sales price. So उसको हम market cost बोलते हैं, market price बोलते हैं. Next is factor cost. Now what is factor cost? Factor cost is cost of all the goods and services being produced in the country using the factors of production. So what are the factors of production? Factors क्या क्या होते हैं? Factors include land, labor, capital, entrepreneur, right? So factors को land, labor, capital, entrepreneur में divide करते हैं हम. So land owners
receive the rent as an income, labor receives the, हम उसको सैलरी बोल लेते हैं, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज बोल सकते हैं, बोनस इंक्लूडेड एंड ये वो सब चीजें जो जो एक सैलरी की इन लिeu ऑफ सैलरी भी मिलती हैं. सो वी कैन इंक्लूड एवरीथिंग इनटू इट. सो व्हाट आर वी सेइंग, लेबर को सैलरी मिलती है, द वन हु इन्वेस्ट कैपिटल रिसीव्स इंटरेस्ट. सो capital generates the interest and entrepreneur receives profit. Entrepreneur receives the profit. So we are doing market price and factor cost. Market price को हम saleable price of the goods भी बोलते हैं. जो भी उस कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी टोटल प्राइस को हम मार्केट प्राइस बोलते हैं प्राइमरीली. ठीक है. Then we can say factor cost. Factor cost means cost of all the goods and services that are produced in the country using the factors of production. जो भी हमारे factors of production है उनको यूज करके हम जितनी भी जो भी चीजें बनाते हैं, it includes factor cost. So ये हमारे factors होते हैं, land, labor, capital and entrepreneur. ठीक है. लैंड पे रेंट रिसीव, लैंड ओनर्स को रेंट रिसीव होता है, लेबर को सैलरी और इन ल्यू ऑफ सैलरी जो चीजें मिलती हैं, कैपिटल जनरेट्स इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर रिसीव्स द प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट? सो इफ आई से मार्केट प्राइस माइनस indirect taxes plus subsidies, what do I get? I get factor cost. So market price में से जब मैं indirect taxes और subsidies, indirect taxes minus कर देता हूँ, subsidies add कर देता हूँ, so I get national income at factor cost. So what do I get? I get national income at factor cost. Am I clear with this point? ठीक है. Can I also say if I subtract net indirect taxes, so which means indirect taxes plus subsidies are net indirect taxes, what do I get? I get national income at factor cost. ठीक है. मेरे को क्या मिलेगा? I get national income at factor cost. So we are clear till now. Factor cost और factor income में क्या क्या आता है, gross और net में क्या क्या आता है, right? There is another concept which is national or domestic. Okay, it is national income and domestic income. So national income and domestic income दो हमारे अलग से concepts हैं. So क्या होते हैं national income और क्या होती है domestic income? What does the national income include? The national income includes what? The national income includes the domestic income and addition to NFIA. So NFIA is net factor income from abroad. Okay. So what does this includes? The national income includes the domestic income and in addition to
In addition, it includes NFIA. NFIA is what? NFIA is net factor income from abroad. जो भी हमारी इनकम बाहर से अब्रॉड से आ रही है, we always include it. ठीक है? Why? Because that is also part of national income. But कौन सी इनकम अब्रॉड से आ रही है, कौन सी इनकम को हम इसमें ऐड करेंगे? We only include that income which is net factor income, which is net factor income from abroad. जो बाहर से नेट फैक्टर इनकम आ रही है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको ऐड करेंगे. Clear? Now there are few concepts that we need to understand. So what are those concepts? The concept number one, if I say GDP MP, so how do I define it? So it means the gross value of all the goods and services produced in the country. GDP तो यही होता है. So MP लिखा हुआ है मैंने साथ में. What does the MP means? So if I say the gross market value of all the goods and services final goods and services produced in the country, इसको मैं क्या बोलता हूँ? Gross domestic product at market price. Next is GDP MP. G, ठीक है, ये GDP था. अब हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, GNP MP. अब GNP, so GNP it means the gross market value of all the final goods produced in the country and the net factor income from abroad. So जितनी भी हमारी फैक्टर इनकम है अब्रॉड से, वो सारी इसमें ऐड होगी. So guys please understand, हम लोग क्या ऐड करते हैं? The factor income. So I can say GDP, what all are included into this, plus the market price, plus NFIA. All the three would be included in this national income, right? So this will be part of national income. Next. So I've just written it. I've used it twice or thrice rather till now. So NFIA. So what do we all understand by this term NFIA? Net factor income from abroad. So it is the, so हमने net factor बोला ना, so net का मतलब कुछ difference है किसी चीज का. So it is the difference between factor income. So what all are the factor incomes? The rent incomes की बात कर रहे हैं, ठीक है? Interest, profit, wages, ये हमारी चार incomes हैं. So क्या है? It is the difference between factor income, that is rent, interest, profit, wages earned by our residents. जो भी हमारे residents इंडिया से बाहर रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, from rest of the world. So
इंडिया से बाहर रहते हैं या इंडिया में रहते हैं एंड दे ब्रिंग देयर इनकम बैक हियर, उसको हम क्या बोलते हैं? NFIA, लेकिन फैक्टर इनकम होंगी, ठीक है? एंड द फैक्टर इनकम earned by नॉन रेजिडेंट्स, कहां से? विद इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री से, इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम, राइट? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, सो इफ आई से NFIA, NFIA क्या होगा? NFIA would be factor income earned by the residents of India from abroad minus factor income earned by the non-residents within our country, हमारे कंट्री से, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस ऑल्सो, बिकॉज हमारे इंडियंस भी तो बाहर से बहुत सारा फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, सो उस डिफरेंस को. नेक्स्ट इज NNP MP. NNP MP, so it is the मार्केट वैल्यू ऑफ, किस चीज की मार्केट वैल्यू है ये? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ all the final goods and services that are produced within the country plus NFIA minus depreciation. सो ग्रॉस वैल्यू में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं उसको हम नेट बोलते हैं बेसिकली, और जब हम उसमें NFIA ऐड कर देते हैं इट बिकम्स NNP, राइट? NDP MP. NDP MP क्या होता है? सो I can say it is the market value of all the goods and services produced in the country. हमारे कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम GDP MP कहते हैं. सो हाउ डू वी मेक इट NDP MP? When we subtract the depreciation out of it, it becomes NDP MP. Next is NDP FC, net domestic product at factor cost. So factor cost क्या होता है? It is the sum total of all the cost incurred in the production of goods and services. So sum total of all the cost incurred in the production of goods and services within the country. So please understand, जब हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो हम विद इन दी कंट्री बात करते हैं. So कौन कौन सी कॉस्ट इंकर हो रही है विद इन दी कंट्री? So we are talking of factors of, we are talking of basically the factors of production. Yeah. So if I say GDP FC, so how do I define this GDP FC? So GDP
FC means the cost incurred on the factors of production within India. इंडिया के बीच में जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? GDPFC. I can also say this NDPFC plus depreciation. So I can also use this in the same way. Next is NNPFC. Now what is NNPFC? NNPFC is the sum total of, it is the sum total of factors income earned by the normal residents and is denoted as, कैसे डिनोट करेंगे हम इसको? So I say NDPFC plus NFIA. So NDPFC plus NFIA, this becomes NNPFC. Okay, so hence it gives the difference to us. What difference does it give? Okay, let us first complete this, then I'll share the difference with you. So GNPFC, it is the sum total of factor incomes earned by normal residents and जो normal residents उसको earn करते हैं includes depreciation. So I can make it like this as well. GNPFC is equal to NNPFC plus depreciation. Or how else can I make it? I can say GDPFC plus NFIA. This is another method of making it. So GDPFC plus NFIA. Okay. Or I can also make it in this way: NDPFC plus depreciation plus, after depreciation, what do I need to add? I need to add NFIA. So I need to add NFIA, right? Now, the main point is, what is the difference between domestic and national? Just for the revision, the difference between domestic and national is the difference of goods produced within the country and the goods produced outside the country. So that is the basic difference between domestic and the national income, right? Now, next to be discussed is the nominal income and the real income. Nominal income, क्या होती है nominal income? Nominal income is market value of all the goods and services, market value of all the goods and services produced during the करंट अकाउंटिंग ईयर. इस ईयर में जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम नॉमिनल इनकम बोलते हैं. सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस इज नोन एज नॉमिनल इनकम.
So what is the formula for devising it? We devise it by, we say y is equal to the quantity multiplied by the price. So क्वांटिटी और प्राइस से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल नॉमिनल नेशनल इनकम प्राइमरीली, राइट? सो ये हम प्राइस और क्वांटिटी कौन सी की बात करते हैं? Q and P of the